Okay. Okay. Thank you. हाँ. Suman sir. Yeah. Sir, On the behalf of Cadila Pharma, myself Suman Khanna from Ghaziabad. Today's topic of the webinar is novel 3-drug dosage of G protein vaccine, ultimate key for compliance. Very good afternoon, doctor. All intimate doctor, thank you so much for joining for today's webinar. Our endeavor is to spread awareness about the rabies, which is the fatal, but can be avoided once appropriately vaccinated. This is the initiative from Cadila Pharmaceutical through the innovate to serve the society of humankind. The topic of webinar dosage reduction is strategy rabies management of role of novel vaccine. Dear Dr. Rabies is the world's first 3-dose anti-rabies vaccine. And with the great pride of would like to inform you that Rabies is the successful completed 1-year launches with more than 40,000 animal bite victims being the vaccinated 100% compliance was recorded and no case of adherence. With this, it is my honor to introduce you to speaker of today's webinar, Dr. Rohit Varsane, MBBS DCH, ex-registered at Holy Family Hospital, New Delhi, private practitioner at Aligarh, visiting consultant to KK Heart and in INT Care Hospital, Aligarh, member of the Action Committee Academy of the Pediatrics, Neurology UP member. Now, I would like to request Dr. Rohit Varsane to initiate talk to. Later on we all have a question answer session. All the participants can drop their question in the drop box and we will read out all the question after the presentation. Now session to hand over Dr. Rohit Varsane sir. Please start sir. Hello, Dr. Rohit Varsane, sir. Sorry. Hello, Mr. Suman. Thank you. Sir, please start session. Okay. Are you getting my voice clearly? Yeah, clearly, sir. Clearly, sir. Okay. Thanks a lot to the Cadila people who are giving me this opportunity to present you this small presentation, and it is a very important presentation, I will say. Rabies, all we know, are the very dreadful and the lethal disease since ages to all of us, and now a specific treatment is there. Only prevention is the cure for this vaccine, this disease. We will start and I will discuss more in further slides. Starting our topic, novel 3-dose G protein vaccine, ultimate key for the compliance. Actually, compliance is the main factor of today's topic, because as we know, prevention is important, and if compliance is not there, then prevention is not there, and we people are prone for the disease. Globally, all we know about this, the volume, about 60,000 of human deaths are annually there in the worldwide, and India shares the highest 20,000 human deaths a year from rabies, according to 60% of the rabies death in Asia. 91% death in India occurs in rural area, because we people are very much deprived of those rabies vaccine and rabies immunoglobulin, which is at much important for the treatment. I will not say treatment, I will say for prevention of the rabies. In every 9 minutes, a person dies from rabies. Very, very scary this data. Current scenario for this post-exposure prophylaxis, all we know about that local wound treatment is the first, most, and the very important manner which we can save the disease in the first go, by washing the local wound at least for 15 minutes in running water with the soaps and detergent. हमें साबुन से अच्छे से धोना होगा उस वुंड को,
जैसे कि हमें मालूम है कोई भी वुंड है। इससे पहले मैं थोड़ा सा कैटेगरीज इसकी बताना चाहूंगा कि रेबीज, जैसे कि हमें मालूम है कि ज्यादातर तो जो हम देखते हैं वो डॉग बाइट से ही होता है। स्ट्रेस डॉग अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम इन इंडिया। स्ट्रेस डॉग में 90-80% हमारे बाइट्स जो है हो जाते हैं, और वो जो रेबीज है उसमें 80-90% शेयर डॉग्स का ही है। उसके बाद मंकीज हो सकते हैं, कैट हो सकते हैं, वाइल्ड में जैकाल हो सकता है, ये सब हो सकता है। और इसके अलावा जो नहीं हो सकता है वो रैट हो सकता है, रैबिट हो सकता है, स्क्वेरल हो सकता है। ये जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं और एक इम्पॉर्टेंट फोकस में ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि पेट डॉग वैक्सीनेटेड है तो हमें वैक्सीन नहीं लगवाना है, तो हमें वैक्सीन जरूर लगवाना है। पेट डॉग जो वैक्सीन 100% हमें नहीं मालूम कि वो इम्यून है उस रेबीज से डिस्पाइट आफ्टर टेकिंग द रेबीज वैक्सीन, या कभी कभी वो जो है उनका इनकम्प्लीट ही कोर्स हो रहा होता है। तो हम वी कैन नॉट बी श्योर, तो सो दैट हमें प्रिवेंशन तो करना ही पड़ेगा। हमें मान के चलना पड़ेगा कि वो एनिमल इसका जो है रैबिट हो सकता है। प्रोबेबल कॉज फॉर रेबीज एज देयर इज नो ट्रीटमेंट, ऑल वी नो। इसके अलावा जो हम कैटेगरीज, अगर हम 3 मेजर कैटेगरी में बताना चाहें, तो पहली कैटेगरी जो होती है वो सिर्फ लिकिंग होती है नॉर्मल स्किन पर। जैसे कि कभी कोई एनिमल आके लिक कर गया, नॉर्मल स्किन पे लिक कर गया, या हम उसको कुछ उसको ईडिबल दे रहे हैं, मुंह से कुछ खिला रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। ये एक खास फैक्टर है जो हम जिसके लिए कभी कभी बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो इसको हमें उसको लीव करना है, इसका कोई खास बात नहीं। सेकंड जो आता है वो स्क्रैच और एब्रेजन्स आते हैं, जिसमें कि एनिमल ने थोड़ा किया है और ऊपर से बाइट भी नहीं किया है, तभी स्क्रैच कर दिया है। इन दैट केस वी हैव टू गिव द लोकल वुंड ट्रीटमेंट फर्स्ट एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीन। इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स आर नॉट रिक्वायर्ड। और जो थर्ड कैटेगरी है वो कैटेगरी ट्रांसडर्मल बाइट की है, जिसमें कि ब्लीड भी हो रहा है या फिर एनिमल ने लिक किया है म्यूकोसा। In that case, we need to give active immunization by vaccine and passive immunization by rabies immunoglobulin. ये बहुत ही important है। पहले earlier there was categories, many categories which were very difficult to remember. Now they come with the very easy classification, and rabies immunoglobulins are very liberally used to protect the person from the disease. All we know, the 5 doses are given presently for prevention of the rabies, which may be troublesome sometimes, as many of the people could not compliance for that. All we know that non-compliance is a major problem in the scenario. कई बार हम कितना भी उसको बताते हैं, कई बार वो नहीं फॉलो कर पाते हैं, कई बार उनको डेट भूल जाते हैं, कई बार वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, या कई बार उनको जो है अननेसेसरी लगता है। तो ये नॉन कंप्लायंस एक बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी जो पुरानी वैक्सीन थी वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, उनके साथ में स्टेबिलिटी ज्यादा प्रॉब्लम था, शॉर्ट सप्लाई रहता था, और उनके सबसे बड़ी परेशानी एडवर्स इफेक्ट ऑफ मल्टीपल डोजेस थी। जो करंट सिनेरियो है वो उसमें 5 डोजेस है। पहले अर्लियर जब मैं देखता था या करते थे हम लोग, तो उस वक्त 14 डोज दी जाती थी। तो 5 डोजेज आर बेटर देन दोज 14। अब ज्यादा बेहतर हो गया, और अभी हम आगे वाले टाइम में देखेंगे कि ये अब और कैडिला पीपल ने जैसे किया है, 3 डोजेस कर दिया है, तो इट विल बी मोर इजियर टू हैव दोस कंप्लीट प्रोटेक्शन। कंप्लायंस को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे, तो कंप्लायंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसने ऑल 5 डोजेस लिए हैं, उसने ऑल 5 डोजेस ऑन टाइम लिए हैं, अप्रोप्रिएटली लिया है, तभी हम उसको कंप्लायंट मानेंगे। अदरवाइज वो डिलेड कंप्लाइंट में जाएगा अगर वो शेड्यूल पूरा भी करता है लेकिन 60 डेज के अंदर कर लेता है, और अगर वो बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं तो उनको हम नॉन कंप्लाइंट मानते हैं, जो कि आने वाले स्लाइड्स में हमें इसका पता लगेगा कि इसमें कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट का क्या आउटकम रहने वाला है।
एक रेट्रोस्पेक्टिव इन लोगों ने एनालिसिस किया, ट्रैवल क्लिनिक एट स्विट्जरलैंड। उन्होंने 110 पेशेंट करीब एनरोल किए थे जिन्होंने की 4 डोजेस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए। उन्होंने जो पाया वो ये था कि सबसे ज्यादा तो लेट इनिशिएशन हो पाया वैक्सीन का, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी वहां पर, या रिमोट एरियाज में थे, या कॉस्ट मे बी द फैक्टर, हेल्थ फैसिलिटीज की प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, पर ये था कि लेट इनिशिएशन था। दूसरा, जैसे कि अभी भी हम देख पाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं हो पाया, जो कि बहुत कुछ रिक्वायर्ड था। और उसके अलावा जो एंटीबॉडी लेवल्स थे समहाउ वो भी कम रह पाए, जो कि पूरे होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए आफ्टर 4 डोजेस। जो आउटकम इन्होंने देखा उसमें काफी खराब वो रहा, 3 डोजेस ही ले पाए, और most of them have not received rabies immunoglobulin. So both the factors may be there for the death, reason for the death. One may be the lack of the administration of the rabies immunoglobulin, and second is also the poor compliance, as 3 doses are not sufficient to protect the patient. That's why we get this poor outcome in those patients. Safdarjung also did the this 360 animal bite patients retrograde studies on the questionnaire was framed, and they found 53% were non-compliant to the full course of the ARB. उन्होंने पूरा नहीं लिया, वही 2 या 3 डोजेस वो लोग लेके छोड़ देते हैं, और ये काफी बड़ा फैक्टर है जो कि सीरो कन्वर्जन नहीं हो पाता, जो हम चाहते हैं कि अचीव हो जाए। ये एक बेंगलोर में इन्होंने ये देखा कि ये हम जब देखते हैं कि 0 पर हम देखते हैं तो 100% तक हमारे पास कन्वर्जन रहता है, लेकिन डे 28 तक आते आते ये 60% ही एफिशिएंसी रह जाती है वैक्सीन की, अगर ये पूरा कोर्स नहीं कर पाते। मतलब कि फर्स्ट डोज पे 100 हो गया, डे 3 पे 88 रह जाएगा, डे 7 पे 85 रहेगा, और डे 14 पे वो 17 मिल रहा है, और डे 28 पर इसका जो है 60 मिलेगा। The compliance rate for intramuscular rabies vaccine was 60%. तो उनको जो मिला वो यही रहा कि जो डे 28 तक गए वो 60% लोग ही जा पाए। ये ज्यादातर जो 85% रहा, हाँ, तो only 60% people just compliant for the 5 doses only. जो नॉन कंप्लायंस के रीजन है ये पाई चार्ट इसमें बता रहा है, जो सबसे बड़ा शेयर है वो 47% का है, एंड दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वेजेस। ज्यादातर जो लोग थे वो डेली वेजेस पर काम करने वाले होते हैं, उन्होंने जो है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी कि हमारा एक दिन का वेज ना जाए, और उन्होंने वो छोड़ दिया, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बाकी स्कूल टाइमिंग में था, थोड़ा हॉस्पिटल से डिस्टेंस रहा, थोड़ा लोग फॉरवर्ड कर गए डेट्स को। तो ये एक जो फैक्टर सबसे बड़ा ये था कि दे आर फियर फॉर लॉजिंग देयर वेजेस। अर्लियर जो हम एवोल्यूशन देखते आ रहे हैं, पहले नर्वस टिश्यू वैक्सीन हुआ करती थी, वो लाइव एटीन्यूएटेड होती थी, और बाद में फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन रही। इन दोनों वैक्सीन में वही 14 डोजेस रहता था, और इसमें साइड इफेक्ट्स और पेन और ऑल दोज वर फैक्टर्स वर देयर फॉर नॉन कंप्लायंस। लार्ज शेड्यूल एंड मैनी प्रिक्स वर देयर। इसके बाद में सेल कल्चर वैक्सीन अब आ गई जिसमें कि 5 डोजेस थी, और वो लिटिल बिट बेटर देन दोज 14 इंजेक्शन। 5 डोजेस आर देयर ओनली। तो अब कंप्लायंस भी बेटर हो गया, हमने देखा कि डोजेस जब कम हुई तो कंप्लायंस बेटर हो गया, इजीली लगवाने लगे सब लोग, और वो पेन भी कम रहा।
तो जो ये नॉन कंप्लायंस था, ये ही वजह था कि ये 13 डोजेस से हमें 5 डोज पर लेके आना पड़ा, और ये अभी भी एवोल्यूशन चल रहा है, और अब हम 3 डोजेस पर लेके आ रहे हैं. This is the ultimate need for medical factor. Meeting this unmet medical need, introducing this novel vaccine by Cadila people with simple and the shorter regimen, and I will say the effective also. Novel 3 dose recombinant rabies G protein vaccine is like novel virus corona, and novel हम का मतलब यही मानेंगे कि ये नया है. जैसे कोरोना वायरस के लिए हमने नोवेल टर्म यूज किया था, ये वैक्सीन के लिए हम इसको नोवेल यूज कर रहे हैं कि ये लेटेस्ट वैक्सीन है, नया कंसेप्ट है कैडिला पीपल द्वारा. ये जो अभी तक आ रहा था वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन आ रहे थे. अब ये पहली बार जो है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन को यूज किया गया है. इसमें वायरस लाइक पार्टिकल इन्होंने बनाया है जो कि इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, और only 3 doses are required to activate the immune system to produce the antibody. It is being better for compliance and very ready to use, and with lesser side effects too. So virus-like particles are similar to the native virus vaccine, but they do not contain the viral genome. So there is no chances for production of the disease, but they can produce the antigenicity and can produce the antibody, humoral as well as cellular immune response. So they are called as VLP vaccine. These people have tried to get the appropriate doses and schedule for this VLP protein vaccine, VLP vaccine to be used for further, and they compare with their counterpart reference vaccine also, and they found this is very much equally effective. Although 2 doses are ineffective, but they when they use the 3 doses at day 90 and day 180 and day 270, they found almost or little bit better than their counterpart. So 3-dose schedule is quite effective. They did this study to establish their facts. Again, we are comparing this to read the to study the effects and after adverse effect with the vaccine. 800 subjects has been taken, and compare this 3 days regime 037 to the traditional with the 5 doses. We found the efficacy on day 14 was almost comparable to the traditional one, 99.24 in the this study vaccine and 97.7 with the reference vaccine. So on day 42 it was also like that, very negligible difference was found, and we also found that this new vaccine, RABIES vaccine rather I will say now, have very limited adverse effects like localized pain, redness, swelling were less, and similarly fever, ear pain, headache, urticaria, joint pain, nausea are also less as compared to their reference vaccine. So in nutshell, it is quite efficacious and quite safe also with little adverse effects, as there is less doses, so less side effects are there.
very simple to catch it, the aim of this vaccine. What I am saying is in the slide, it is non-inferior to the reference vaccine. Lesser side effects are there, and they are found to be a safe and immunogenic as compared to the 5 doses of the WHO pre-qualified vaccine which are running in the market. All these have also get this award for this fabulous work by this Cadila, and Pharma Innovation of the Year by Economics Time, and Golden Globe Tiger Award Malaysia for this innovation product of the year. In the future, it will definitely bring the revolution also in the cases to cut down the cases of rabies. Thank you. Thanks a lot. Any question I will try to share. When these people, when I got this chance to have this presentation, I always think that I will get some knowledge from one this question is, presentation. doctor, how is the symptom of rabies, sign and symptom of rabies? You are asking for the sign and symptoms for the rabies. What Yes, I get it. Okay. Actually, 2 types of symptoms are found. I will say first, the incubation period of this rabies vaccine. It starts from 4 days to 3 years on large. I can say 4 days to 3 years is the incubation period which can present the rabies symptoms. 3 weeks to 3 months are quite the peak time which we can get those symptoms, and we can also get those symptoms in after 10 years or 20 years, like that, but very rare. But commonly the incubation period what we read is 4 days to 3 years almost, and 3 weeks to 3 months is the commonest time which we get the symptoms. Your question was the sign and symptoms. The sign and symptoms start from the very classical symptoms, the what we get hydrophobia. पेशेंट के पास पानी लेके जाते हैं तो वो पानी से स्कैरी हो जाता है और वो उठा के गिलास फेंक देता है. दूसरा एरोफेजिया होता है, अगर उसके पास पंखे की हवा या कैसे भी आप हाथ से भी अगर उसको वो कर देते हैं तो इन दैट केस वो जो है उसे भागने लगता है. इसके अलावा जो उसको क्लासिफाई किया गया है, वो क्लासिफाई किया गया रेबीज के, एक फ्यूरियस रेबीज होता है और एक डम रेबीज होता है. तो जो फ्यूरियस रेबीज है उसमें बहुत तेजी से सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट एंसेफ्लाइटिस में चला जाता है. एंसेफ्लाइटिस में वो इरिटेबल होगा, उसको कन्वल्जन हो सकते हैं और लेटर ऑन कोमा हो जाता है. और आफ्टर टू मच प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज उसको पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है और आफ्टर दैट पेशेंट कुड नॉट बी सर्वाइव. जो दूसरा डम रेबीज की बात कर रहे हैं, इन दैट केस रेबीज का प्रोग्रेशन स्लो रहता है. इट इज वेरी स्लो. इट मे कॉज फर्स्ट numbness, tingling in the patient, then progressively it causes paralysis of the limbs and further progress to respiratory paralysis, and that causes death. In that case it is very slow as compared to the furious rabies. Next question, sir. I'm not getting you, sir. Mr. Sumanji, I am not getting you. सुमन सर आप म्यूट करिए, म्यूट हो रखा. सर क्लिनिक एक्सपीरियंस फॉर शेयर करेंगे रेबीज के रिगार्डिंग. Pardon? क्लिनिक आपका एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल क्लिनिक एक्सपीरियंस. पर्सनल एक्सपीरियंस. Yeah, I have seen one case only in my medical post graduation only.
and that patient could not be survived. That patient presented with irritability, and that same hydrophobia and aerophobia like symptoms were there. Ultimately, that patient has to be referred but could not be survived. And till date, only 1 or 2 cases are reported officially which can be survived after getting rabies. What I know. थैंक यू सर, आपने सेशन को काफी इंटरेस्टिंग बनाया सर, काफी अच्छा आपने elaborate किया सर, and thanks for all participants for giving your valuable time, and thanks for our speaker for giving your valuable time. Thank you, doctor. My pleasure. It is my pleasure. Thank you, Kunal. I will say some words in the last. Personally, what I feel for this vaccine. Can I say? Yes, sir. Yes, sir. I personally felt that 3 doses are effective. Even any doctor can assess this thing. 3 doses quite efficient, quite compliable. So we can get the better result, and you people did really a good job. I will thanks to Cadila people for making some such revolution for us. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, support team, Cadila team. Thank you, all of you. Please log out. Thank you, sir. We close the meeting. कितने participant कितने रहे? More than 225. किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा? सर ये इसके लिंक बने थे, पार्टिसिपेंट के लिए अलग लिंक बने थे और स्पीकर के लिए अलग बने थे, इसीलिए हम लोग पार्टिसिपेंट को देख नहीं सकते हैं सर, बट एचओ पीपल देख रहे हैं सर, जो हमारे सपोर्ट टीम है वो देख रहे हैं। थैंक यू सर।